Repte après-moi. Now, vous devez poser la question. C'est clair? Oui? C'est clair, mademoiselle? Yes. À quelle, répétez après moi, à quelle période, à quelle période, in which period a lieu, répétez après moi, in which period a lieu cette randonnée sportive, cette, répétez après moi, इसका प्रैक्टिस करोगे आप, मेरे साथ बोलोगे, and you can speak like anything then. Randonnée, répétez après moi, randonnée sportive. Sport. Non, répétez après moi, à quelle période, répétez après moi s'il vous plaît. Period. À quelle période, mademoiselle, repeat Period. à quelle, Quelle période read on please. À quelle That's période, random supportive. à quelle période, à cette randonnée sportive? when does this sport hike take place? ये कहाँ पे होगा? Lieu, lieu is to take place. À quelle période, à lieu? It means répétez après moi, à quelle période a lieu? Répétez après moi. It is very important. Whenever you're saying, À quelle période a lieu? at what period does it take place? At what period? Morning में होगा, afternoon में होगा, winters में होगा, summer में होगा. We are not aware. Say Claire. Yes. I'm saying lieu. L-I-E-U, Mademoiselle Panda. Now you will come to know how to phrase what to say to your jury. So, lieu is to take place. Lieu. Lieu is to take place. À quelle période a lieu cette randonnée sportive? Mademoiselle, now, good read, mademoiselle. Repeat 100 times. Lieu. Because this is your section A, you will get a very good marks. I'm saying at what period it take place. Now, for example, il y a des randonnées. Did I mention summer, winters, in which season? No. Did I mention any day? No. No. Right? So you No raise the question, place. right? At what period does it take place? À quelle période a lieu? Lieu is to take place. To take place. A lieu. A lieu. Sportive. So Cette randonnée sportive. yes. Now, for example, mademoiselle, there is a football tours. For example, there is a holiday tours, anything. And you to raise a question. So raise the question, mademoiselle. These terms have to fix in your mind. À quelle Quelle période a lieu cette randonnée sportive? C'est clair, mademoiselle. Why? Yes. À quelle période a lieu is to take place. Now you will come to know a very good vocab, a lieu. C'est clair. Why? C'est clair, mademoiselle. Tell me yes or no. Gurpreet, mademoiselle, my teammate. प्रैक्टिस करना है आपको अपना वॉइस पूरी डेली सबमिट करना है मेरे को. Say clair. Why, Gurpreet? The Yes, pronunciation is a lieu, right? Lieu. A lieu, a quel period of lieu cette randonnée sportive. Exactly. C'est clair. Why? Now, the next we have is quelle est la durée? Quelle est what the duration? Répétez après moi. quelle est la durée? Quelle est la durée exact? तो कह रहे exact duration क्या है? Quelle est la durée exact जो séjour है, stay है, उसमें लिखा हुआ है 3 to 4 days, 3 to 5 days लिखा हुआ है, right? बट आप एक क्वेश्चन रेज करो अपनी जूरी के साथ, मैम quelle est la durée exact? 3 to 4 days लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है? quelle est la durée exact du séjour? 3 jours, ये 3 days का है, 4 days का है, क्या séjour? क्या ये 4 days का है और क्या ये 5 days का है? Tell me the exact séjour, then only I can decide.
से क्लैर mademoiselle, mademoiselle अगर आपको नहीं समझ आ रहा यू रेज योर हैंड, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज मैं आपको सेक्शन ए के मल्टीपल टॉपिक्स करवा रहा हूँ. लाइक पहले हमने क्या किया था, फॉर्मेशन किया था mademoiselle. गुरप्रीत, हैव यू डन ट्रेनिंग वाला सेशन? टेल मी यस एंड नो. Yes, हमने उसके the बाद training session I have done. उसमें वॉलंटियर किया था. वॉलंटियर, Yes. टेल मी गुरप्रीत and Yes. my teammates, have you done Yes. volunteer? Yes. We have done what? Yes. Formation. Now we are doing randonnée, hiking in the tours. C'est clair. So Yes. if I will give you 50-60 tasks of section A and आप जब practice करोगे, जब proper practice घर पे, you have to spend your time. Vous devez consacrer le temps. You have to spend the time avec votre étude. You have to spend the time with your etude study. It means multiple times you have to. Now, for example, you are eating something, you are reading something, you are sleeping. So speak like anything. Quelle est la durée exacte de séjour? What is the exact duration? Very simple. C'est clair. C'est très simple. Tell me yes or no. Quelle est la durée? Yes. What is the duration of this exact stay? Quelle est Quelle est la durée exacte exact du séjour? 3 jours, quelques jours. du séjour? Ouais. Quels sont les niveaux? niveau हम यूज कर रहे थे वहां पे, आपको पढ़ना है वो टॉपिक. अगर what type of level is that? अगर निवो बहुत डिफिकल्ट है, मान लो हाइकिंग टूर जो है माउंटेन बहुत टिपिकल है, तो आप बोलो मुझे बताओ, तभी तो मैं कहूँ. अगर वो बहुत टफ है तो मैं नहीं लूंगी पार्टिसिपेट. Why? C'est clair. Quels sont les niveaux? Quels sont, ouais, les niveaux? C'est clair, mademoiselle. Quels sont les niveaux? What are the levels? Quels sont les niveaux? Débutant, we have in the beginning. In the beginning में level क्या होगा? Débutant, mademoiselle, débutant. In the beginning, débutant. Répétez après moi. Débutant. Repeat it, please. Débutant. Repeat 5 times. Débutant. Débutant. वो क्या कह रहे हैं? What are the level of the beginners? Like I'm a beginner, right? Now, for example, I'm living nearby the mountains. Yes, but I think I hardly entertained myself for 3 to 4 times, but not too much. I'm saying, quels sont les niveaux débutants? What are the level for the beginners? Débutants. C'est clair, mademoiselle? Débutants. C'est clair? फिर आप पूछोगे intermédiaire, intermédiaire. Répétez après moi. Intermédiaire, intermédiaire, médiaire. Non, répétez après moi s'il vous plaît. Intermédiaire, intermédiaire. Intermédiaire. It means intermédiaire. इसमें intermediate level. Intermediate के लिए क्या level होगा? C'est clair, mademoiselle. Intermédiaire, ouais, c'est clair. ou avancé और एडवांस के लिए क्या लेवल होगा? वो कह रहा है कि ou avancé and or advanced. So he's asking for the level. Like for example, there's a French exam going on, a French competition going on, and for example, you are intermediate. You are in the intermediate level. अब वो कंपटीशन हो रहा है, आप पूछोगे कि कैल्सो ले निवो की लेवल क्या है डेब्यूटों के लिए, इंटरमीडिएट ou avancé और एडवांस लर्नर्स के लिए. से क्लास टेल मी यस और नो. ऐसे ही माउंटेन हाइक में ही यूज निवो डिफिकल्टी. निवो, have you remember when we read निवो difficulty? Why? Mademoiselle, did we read niveau difficulty? Difficulty. Repeat, mademoiselle and team, tell me. Yes. So, quels sont les niveaux débutants, intermédiaires ou avancés? इसको repeat करो, repeat, mademoiselle. À quelle période a lieu cette randonnée sportive? Quelle est la durée?
Accept du séjour, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Quels sont les niveaux débutants, intermédiaires ou avancés? Repeat it, please. Oui, Gurpreet. Quelle est la durée exacte du séjour? 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ouais. Quels sont les niveaux débutants? Intermédiaire ou avancé. Intermédiaire ou avancé. Intermediate or advanced level. C'est clair. Ouais, c'est bien. Now, Gurpreet and my teammates, I'm giving you, a vocabulary, because this is how you level. If you say, what are the levels required? अगर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? Yes. क्या लेवल रिक्वायर्ड होगा मेरे लिए? C'est clair. Okay. C'est clair, mademoiselle? Yes. Non. Yulas, quel est le niveau? Répétez après moi. Quel est quel est le niveau? What is level? Quel est le niveau? Exigé. 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 Exigé sur exige. Require exigé pour inscrire. 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 We have, to take an admission. Inscrire. To enroll. To register. To registration. Inscrire. Inscrire mon enfant, my children. वो कह रहे हैं कि मेरे children को, मेरे बच्चे को अगर एडमिशन लेना है तो क्या लेवल रिक्वायर्ड है? Say Claire, tell me yes and no. Yes. Gurpreet and my teammates, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, पक्का ये आपको होगा ये. Quel est le niveau exigé required? What is the level required pour inscrire mon enfant à ce séjour de randonnée? तो répétez après moi, quel est le niveau exigé pour inscrire mon enfant à ce séjour? Quel est le niveau exigé pour inscrire mon enfant à ce séjour de randonnée? C'est clair. Why? Tell me yes or no. Why? Yeah. Okay. Now you will say, mademoiselle, quel est le nombre d'enfants dans chaque groupe de randonnée? आप पूछोगे ना कि मान लो आपका बच्चा जा रहा है, तो हम बोलोगे ना हर एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे फिर? से क्लास पूछोगे ना आप ये. Why? Tell me yes or no. So बहुत simple है mademoiselle. Quel est le nombre? What is the number? What is the quel est? What? Have you done that? Quel? Tell me yes or no. Why? Quel est le nombre d'enfants? Why? C'est clair. C'est clair. Why? Tell me yes or no. Quel est le nombre d'enfants? C'est clair. Quel est le nombre d'enfants dans chaque groupe? Dans chaque. Quel est le nombre d'enfants dans chaque groupe? Chaque. We have every group. We have group. I'm asking to you, mademoiselle. Quel est le nombre d'enfants dans chaque groupe de randonnée? Tell me yes or no. Yes. Mademoiselle, c'est bien. Why? Tell me yes or no. अगर कोई doubt है, si vous avez le doute, vous pouvez poser, vous pouvez demander le doute. Tell me. Si vous avez le doute? Now? No. क्या था clear है सबको? Yes. Okay. अब मैं पूछूंगा le groupe de randonnée, les groupes. Répétez après moi. Les groupes. Or you can make your own question also. Or मैं अपना question बना रहा हूँ. Right? You can take an idea and you can make your own way. Les groupes de randonnée. समझ आ रहा है वो गुरप्रीत माधुमचल?
Yes. Les groupes de randonnée, ouais, sont-ils ils sont, question is करो, Sont-ils? have you done ना, या-t-il, il y a, Yes. Y-a-t-il, sont-ils? sont-ils formés selon le niveau, according to the level, selon le niveau de ou l'âge des enfants, ou l'âge, According to the age. इसको पढ़ो आप एक बार, les groupes de randonnée, the group of जो randonnée का जो group है, right? Les groupes de Hiking group. randonnée. Group Are so they il- formed? Sont-ils? Partly composing. Sont-ils formés? If we have an adjective over Sont-ils here, formés? you are asking for this. Sont-ils formés formés? Selon. They formed according to. Selon is according. Selon is according. C'est clair. Selon. You see, les groupes de randonnée sont-ils formés? The hiking groups are they formed according to the level? आप पूछ रहे हो कि ये जो ग्रुप है, ये जो मेल बनाओगे आप, ये लेवल वाइज बनाओगे या एज वाइज बनाओगे? C'est clair. आप पूछो les groupes de randonnée sont-ils formés? C'est clair, mademoiselle? Yes. Repeat it, please. Les groupes sorry. randonnée Les groupes de randonnée sont-ils formés selon le niveau ou l'âge des enfants? Les groupes de randonnée sont formés selon le niveau ou l'âge des enfants. Non, repeat it, please. Les groupes de randonnée sont-ils formés ou selon le niveau ou l'âge des enfants? Les groupes de randonnée sont-ils formés selon le niveau ou l'âge des enfants? C'est clair, maintenant? Ouais, c'est clair. Yes. अब आप बोलोगे ये भी कि हर ग्रुप पे एक गाइड रहेगा या सारे ग्रुप्स के लिए कॉमन गाइड रहेगा? Yes, exactement. C'est clair. Why? Now, répétez après moi, s'il vous plaît. You can say, j'ai lu sur l'annonce, I have read the announcement. J'ai lu, हमने किया था ना, j'ai reçu. अब आप बोलोगे, I have read the announcement. J'ai lu. Why? C'est clair. I read. Passé composé. Lire, passé is lu. C'est clair. Lire is my verb to read. Passé is lu. Et la passé composé. Our verb, j'ai lu. C'est clair. Why? Tell me yes or no. Yes. Repeat, mademoiselle and team. Tell me yes or no. Yes. J'ai lu. Why? J'ai lu. Sur l'annonce. It means I read the announcement. I read upon the announcement que chaque groupe qui जो que that que chaque groupe est accompagné आपको la question mademoiselle Swanlata est accompagné वो कह रहे कि I have read upon the announcement que chaque groupe est accompagné is accompanied. C'est clair. Est accompagné d'un guide कि खाली एक गाइड रहेगा. C'est clair. ये पूछना चाह रहे थे आप सोनता मैडम? हाँ जी सर, की मतलब हर ग्रुप पे एक गाइड रहेगा या सारे ग्रुप? You're saying j'ai lu sur l'annonce, I read the announcement que chaque group, that every group, हर एक जो ग्रुप है accompagné. Okay, we have a typing error over here. Sorry, accom. यहाँ पे m लगा देना o के बाद, right? C'est clair. o के बाद m है. Accompagné. मैं बोलूँ कि हर एक ग्रुप के साथ एक गाइड रहेगा ना. अब बोलो j'ai lu sur l'annonce que chaque group, every group est accompagné d'un guide. ये ना हो कि 15 ग्रुप बन गए और एक ही गाइड है. C'est clair. So reading your question, j'ai lu sur l'annonce que chaque groupe est accompagné d'un guide. And
A and en ce qui concerne, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर है ये, en ce qui concerne, बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर। en ce qui concerne मैं बहुत यूज करता हूँ, ये पता है, हम बहुत यूज, en ce qui concerne, en ce qui concerne, répétez आप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल कनेक्टर। en ce qui concerne, en ce qui concerne, répétez après moi s'il vous plaît। En ce qui concerne, en ce qui concerne. Yes, this is a beautiful, beautiful connector माधवी, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। en ce qui concerne, en ce qui concerne, en ce qui concerne, c'est clair। Ouais? En ce qui concerne. En ce qui concerne, c'est clair। Et, c'est clair, mademoiselle? Et, Yes. dans ce qui concerne, c'est clair, mademoiselle? Ouais? Et en ce qui concerne. Yes, in regards to. Et en ce qui concerne, in regards to, et en ce qui concerne, c'est clair. This is a beautiful connector, mademoiselle. Ouais? C'est clair. Et en ce qui concerne, les éducateurs and in a concern, et en ce qui concerne, les éducateurs, éducateurs, les éducateurs. Répétez après moi s'il vous plaît. What I'm saying over here is, en ce qui concerne, and with regards to the educators, c'est clair? So can you pronounce educator? I will. Les éducateurs or éducateur? Éducateur, because we have S over here. Yes. Et en ce qui concerne les éducateurs, En ce qui concerne les éducateurs, मैं कह रहा हूँ कि as far as the education is concerned, c'est clair. So I'm saying over here, en ce qui concerne, and with regard to educators, इसको बोलो गुरप्रीत mademoiselle, इसको बोलो. J'ai lu sur l'annonce que chaque groupe est accompagné de guide. C'est clair. J'ai lu sur l'annonce que chaque groupe est accompagné de guide et en ce qui concerne les éducateurs. Yes, it is concerned for the educator, un ou plusieurs éducateurs. Again, he's asking, éducateur, un, one, ou plusieurs, lot of, plusieurs, ouais, c'est clair. Plusieurs, c'est clair. Plusieurs éducateurs. Yes. Plusieurs éducateurs. Plusieurs éducateurs sont-ils présents? Sont-ils? Again, sont-ils? Sont-ils présents? Sont-ils présents? Sont-ils présents? Sont-ils présents? Sont-ils présents dans chaque groupe? Dans chaque group. Present in each group. Yes. I'm saying un ou plusieurs éducateurs. Répétez après moi, mademoiselle. One or more educators are present in each group. C'est clair. Now répétez après moi, s'il vous plaît, mademoiselle. What is this? Basically, you're saying over here, répétez après moi, j'ai lu sur l'annonce, répétez après moi. Repeat it, please. J'ai lu sur l'annonce que chaque groupe est accompagné d'un guide. समझ आया आपको? कह रहे कि I read the announcement that every group has a one guide. En ce qui concerne les éducateurs, en ce qui concerne les éducateurs, in regard for the educator, un ou plusieurs éducateurs, one or more educators, sont-ils présents? Sont-ils présents
The shark They present group. or are they present? Say Claire. They are present or are they? So till present because you're reading a question. The shark group. Say Claire. Why? Yes. Tell me, The Madhumar. shark group. Tell me yes and no. Yes. Say Claire. अच्छा, have you written Yes. entire thing? Akel period something था कुछ लिखा है आपने उस चीज को? Mademoiselle, I'm asking you. आपने लिखा है आपको मैं फिर वो दूं आपको पूरी लिस्ट दूं आपको इसकी? सर लिखा है। लिखा है नहीं लिखा बस ये बताओ. Yes. We have written. You have I written. have written all the questions. Okay. और नमीश समझता आपने लिखा है? Yes sir. Yes, sir. मदाम आपने लिखा है? नो यस लिखा है? ओके वेरी गुड. नहीं तो मैं आपसे एक पूरी फाइल शेयर कर देता इसकी एंड आई विल शेयर आल्सो. से क्लियर? अच्छा ये हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने रेज किए राइट. से क्लियर? अब आगे 4 5 क्वेश्चन और हैं जैसे किल लतीफ द बेशमो. आप बोलोगे व्हाट इज द टाइप ऑफ एकोमोडेशन? व्हाट इज द टाइप ऑफ एकोमोडेशन? सिंपल. केले रेप्टे आपने माdemoiselle. Quel est le type de d'hébergement? Quel est Keep the patient. होगा ना कि बड़े quel est le type? Say Claire, mademoiselle. Quel est le type? Or I can say quel est le type. I can say or quel est the type of the types of. I can also say quel est le type. If I will say quel est, तो यहाँ पे फिर es आता है Claire. So quel est le type d'hébergement? Quel est le type d'hébergement? C'est clair, mademoiselle. C'est clair. Quel est le type d'hébergement? D'hébergement. Quel est le Accommodation. type d'hébergement? Quel est le type d'hébergement? What is the type of this accommodation? C'est clair. C'est clair. C'est clair, mademoiselle. D'hébergement. और सर इमरजेंसी Sorry. इमरजेंसी के लिए कोई अरेंजमेंट क्या कोई मेडिकल Yeah. टीम अगर कोई Very इशू good. होता है? You are asking like what is the treatment, है ना? What is the facility? I will say not treatment. What is the facility for emergency treatment? Why? यही सिचुएशन emergency treatment and situation. Yes. What is the facility? So Can can we write Zavevu le médecin? Yes, yes. Do you No, have no, no. doctor? Vous avez, ok. Est-ce que vous avez le traitement? Est-ce que vous avez le traitement d'urgence? क्या आपके पास कुछ okay, I will write it down. Est-ce que do you have? Vous avez le traitement, the treatment of the emergency. Est-ce que vous avez le traitement d'urgence et la situation? C'est clair? Why? Do you have the emergency treatment and the situation? No. C'est clair? Do you have the emergency treatment? लिखो एक बार आप. Do you have? Do you have? Say, do you have the emergency? Do you have the emergency treatment? कुछ भी आप बोलो. Emergency treatment if someone get hurt. If someone get hurt. Say Claire. Why? Say Claire. Tell me yes and no. So आप बोलोगे avez-vous बोलना चाह रहे हो mademoiselle Damni? I will say Avez-vous? Avez-vous le traitement d'urgence si certains sont blessés? Blessés. We have done. One second. Let me write it down. I can say avez-vous le traitement d'urgence? Emergency. D'urgence. D'urgence. Urgence is emergency. Avez-vous? You have. Do you have? Have you the treatment?
Le traitement d'urgence, c'est certain. If someone, certain. C'est certain if someone sont blessés. Blessé is to injured. C'est clair, mademoiselle? Ouais. C'est clair? Oui. C'est clair, गुरप्रीत? Blessé. Yes. Injured. लिख लो आप. घायल. C'est clair? Ouais. C'est clair? Yes. C'est clair? So basically we have verb blessé. We have full verb which is blessé. So यहाँ पे e agu आ गया. Blessé. So. C'est clair? So avez-vous le traitement d'urgence si certain sont blessés? Répétez après moi, s'il vous plaît. Do you have the emergency treatment? Someone get hurt? Traitement d'urgence si certains sont blessés. C'est clair, mademoiselle? Why? Yes. Okay. अब आपको एक मैं टास्क दे रहा हूँ करने के लिए. What is your task? I will share. अभी demo we have entire session under recording, so I will share the 2 recordings अभी. ठीक है? आपको क्या करना है? Submit your voice and your writing task abhi. Say Claire, can you do that? Because the moment you will submit your voice, you will speak out and your level will become strong. Say Claire, tell me yes or no. Yes. Gopit, mademoiselle, you please tell me. समझ आया आपको? पता लग रहा है आपको कुछ चीजें? Yes. लग रहा है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक लेवल पे आएंगे. Tell me yes or no. Yes. Why? So ये प्रैक्टिस करना है आपको. Now you have 3 section A. All of you, you have 3 section A. तीनों section A का मुझे voice बोलनी चाहिए because Sunday आपका off है. Claire. Why? So tomorrow you have off. Say Claire. Tell me yes or no. So Yes. I need today. I need your task. Gurpreet Madhusar, can you send it to me in the next half an hour, 1 hour time? This task today. Yes. Task. In the group you can mention. Okay. Group में करना mention. Okay. And you have Sunday. I know maybe in Canada you work over there on weekends. I'm not sure, Gurpreet. But Gurpreet, I need entire 3 section A, which we have done in your recording and your writing task in the group. Say Claire, can you do that? Yes. Yes. Your time starts now. Why? Namish, send it back to me. Say Claire, all of you please send it back to me. What's your homework? Your homework is section A के 3 part we have done. तीनों I need in my WhatsApp. Say Claire. Yes. Why? Okay. With your voice recording. Say Claire. Yes. Gurpreet, Yes, sir. Toothless shows. My teammates who compliment toothless shows. You understand entire thing? Why? Yes. Why? Yes. Your time starts now. Send it back to me now.